electromagnetic induction and the electromagnetic EM waves। ये हमारा चैप्टर नंबर 18 है। यहाँ हम इस अबाउट द इलेक्ट्रिक मशीन मोटर्स जो यूज़ होती हैं वाटर करंट के लिए और सेटअप के लिए, प्लांट्स के लिए डिफरेंट होती हैं। और कॉइल्स हमारी मेटल कॉपर मेटल्स की बनी होती हैं। A coil consisting of 50 tightly wound turns experiences a change in magnetic flux from 0.3 Webbs to 0.8 Webb over a time interval of 0.4 as determine determine the average induced electromotive force generated in the coil during this time। फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स होती हैं, अगर हम गेम्स के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हैं तो वो अपनी टर्न्स और इंडक्शन थ्रू कॉइल्स स्पीड से वर्क करना अपने एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर्स होती हैं घरों में, वॉशिंग मशीन्स वगैरह, ये मोटर्स का यूजेस सोल्यूशन उसमें हमारे करंट और मैग्नेटिक फील्ड होता है, फ्लक्स होता है। n इज इक्वल टू 50 टर्न्स 0 1 इज इक्वल टू 50 टर्न्स 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 1 मिनट और 2 मिनट्स का यूजेज होती हैं। इतने सेकंड में जो है करंट यूज़ होता है। 5 1 इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू 0.3 वेब 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड 0.8 वेब। करंट के अलावा मैग्नेट भी यूज होते हैं, सो उनसे क्रिएट होने वाली फील्ड इज फ्लक्स। टी इज इक्वल टू 0.4 एस एंड द ई इज एप्सिल नॉट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव ई एम एफ फोर्स भी कहलाती है, इज इक्वल टू फॉर्मूला है -n फ्लो ऑफ करंट को कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहलाती है। समटाइम ऑफ होता है, समटाइम -n चेंज इन द फाई एंड द चेंज इन टी। घरों में यूज़ होने वाली वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर, लार्ज स्केल पर क्रश करने वाले इलेक्ट्रो प्लांट्स, del phi is also equal to phi 2 minus phi change in phi is equal to 5 minus 50 into given है 50 turns 0.5.4 s is equal to minus 62.5 voltage। Numerical 18.2 a circular loop of radius 0.52 meter and the resistance 5 ohm is placed perpendicular to a magnetic field of 0.5 t. If the field drops to 0 is in 0.1 s, calculate the induced EMF B, induced current and its in direction using the field point into the page। Induce means after the current flows it works, so it is called the induce। Solution given data R is equal to 0.2 meter, R is equal to 5 ohm, magnetic field is equal to 0.5 Tesla, EMF is equal to energy upon the charge। हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कैलकुलेट द एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एक कैलकुलेटर ही है, कैलकुलेटर में जहाँ सेल डला होता है और मैग्नेटिक होता है, और समटाइम अगर हमें इसे पावर से पावर भी यूज़ करें, द एरिया मैग्नेट क्रिएट with this electromagnet we will calculate through this formula and the pi area find करना है and the current how many use for this wire or wire। Find the change in the magnetic flux phi loop area
A is equal to pi r square. A is equal to pi into 0.2 m square, 0.04 m. वहाँ जो हमारी वॉशिंग मशीन पे लूप्स और क्लॉक्स बनी होती हैं, क्लॉक्स लूप्स होती हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए. पाई एरिया इज इक्वल टू 0.52 मीटर. सर्कुलर लूप्स की बात हो रही है. सर्कुलर लूप्स फॉर एग्जांपल मीटर लगे होते हैं मशीन मोटर्स वगैरह में. फाइंड द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज गिवन बाय फाई बी डॉट ए cos 1 0 degree is equal and 0 degree is equal to cos 0 is equal to 1. Initial flux phi initial I is equal to B into first A is equal to 0.5 given है Tesla. Magnetic field and the area, total area that works for is wire used in this machine is or motor or magnetic field 0.5 Tesla. Find flux phi final B into A final is equal to 0 T into 0.125 मीटर स्क्वायर. ज़ीरो है सो ये ऑल ज़ीरो हो जाएगा. ज़ीरो वेब वाइल यहाँ फर्स्ट इनिशियल जो है वी की तरह वी आई एंड बी एफ इज इक्वल टू गिवन है 0.5 इंटू 0.125 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.628 वेब कहलाती हैं. और एंड दिस इज वन टोटल फॉर एग्जांपल 1 month 1 क्विंटल वेट होता है. सिमिलर वायर इज वे इन टी and this is the word wave. For this use a current rules in area for flux. Change in flux del phi is equal to del f minus del I is equal to 0 minus change in flux and final phi is minus initial phi is equal to 0 minus 0.628 is equal to minus 0.0628 web. Faraday's law of induction. Induction E is equal to del phi upon the del T. Meter change. It's needles sometime here, sometime. This is the change of change is called change phi. Angle change. When needle change its angle, this is del phi and del upon del T is equal to 0.628 web upon 0.1 s is equal to 0.628 radius. Calculate induced current using Ohm's law. I is equal to E upon R is equal to 0.628 V upon the 5 ohm is equal to 0.1256 A approximation ampere 0.12 A. टोटल एरिया मैग्नेटिक फील्ड हमारी एरिया से रिलेटेड है 0.1 एरिया मल्टीप्लाई बाय द गिवन टेस्ला टी. वायर को एरिया से प्रोडक्ट करके वन वेब इनिशियल एंड द फाइनल 0 एंगल पर 0 डिग्री पर 0 फ्लक्स.